अस्सलाम वालेकुम listeners and viewers. उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे. Welcome to Silly Point by Zalmi TV, hosted by the Gulley Cricket Show. मैं हूं आपका होस्ट शयान. और मैं हूँ आपके साथ आपका को-होस्ट तैमूर अहमद। आज के दिन हम लोग प्रीव्यू करेंगे पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का क्वालिफायर 1. पेशावर ज़ल्मी and Multan Sultans are the table toppers for this year's PSL. And they both had a very consistent run. Multan has been impressive throughout the tournament. They've had a very successful run in the PSL for the last 4 or 5 years. Or Peshawar Zalmi also has been very consistent. They've been qualifying for the playoffs since the inception of this league, and this year was no different. Peshawar, however, peaked at the right time. They had initial losses against Karachi, specifically, where they lost to Karim Pollard's blitzkrieg, and then Multan altogether has been consistent overall. So, Taimur, आप बताएं, how do you rate? You're coming from Multan, and how do you rate Multan Sultan's performance so far? We can probably talk about their highlights, any standout performance for you that you want to bring up before we move on to Peshawar. I think Multan, as usual, has been very consistent this year, and like we have talked about, previously as well, we have talked about Rizwan and how his captaincy somehow brings the best out of his players. Sometimes he may not have all the big names in the squad, but somehow everybody clicks at the right time. So this year has been no different, in my opinion. Credit goes to the way he runs the team, and also the way, I guess, the management gives them the confidence to go and play their own game. So yeah, I rate them highly. Even the game today was pretty one-sided. For me, the highlight of Multan Sultans this year so far has been the 2 centuries by Usman Khan. Yeah. And the way he has been playing, yes, he got he was outfoxed by Mr. Abrar today, but overall I think his confidence and the energy that he brings on the pitch is amazing. So yeah, I rate them highly, and as usual they have been very consistent, and rightly so. They're sitting at the top of the table. Yeah, Multan Sultans की जो सबसे अच्छी बात जो है, over the last couple of years, वो है कि they've been able to extract performances out of players that no one really expects. Khushdil Shah, he's been down under the radar this year, but in the past seasons we've seen him perform. Iftikhar Ahmed coming into this season did not have good performances, but he's had a good year so far. Same thing goes with Yasir Khan, जो backup opener हैं आपके, Abbas Afridi, all these guys who've had I'm not going to say a tough year, but they didn't have strong performances coming into the tournament. But as soon as the tournament started, they started to click and give performances. So I think ये बहुत अच्छी quality है मुल्तान की कि they are able to extract performances, which is what other team lacked, specifically Karachi and Lahore. Would you agree with that? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और एक बात ये भी है कि जैसा मैं भी कह रहा था कि मुल्तान के पास बहुत बड़े नाम नहीं है, लेकिन उनका जो पूरा ग्रुप है मुल्तान का, उसमें तवाज़ुन बहुत अच्छा है। जैसे आपने अब्बास आफरीदी की बात की, आप मोहम्मद अली को भी ले लीजिए। मतलब कुछ अर्से पहले तक उनके नामों को बहुत लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन उनका जो एक ख़ास स्किल सेट लेकर आते हैं वो टीम में, जो उनका एक स्पेसिफिक टैलेंट है, वो आप कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान किया मुल्तान की मैनेजमेंट ने। दे नो एग्जैक्टली विच प्लेयर दे नीड एंड हाउ टू यूज़ दैट प्लेयर। सो कभी कभार होता है फ्रेंचाइज क्रिकेट, जितनी भी सीरीज हम देखते हैं अराउंड द ग्लोब, बहुत दफ़ा फैंस जो हैं वो बड़े बड़े नामों को देखना चाहते हैं, राइटली सो, बिकॉज इट्स आई मीन टूर्नामेंट्स लाइक PSL एंड अदर T20 टूर्नामेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, ये फेस्टिवल्स हैं, ये एंटरटेनमेंट हब्स हैं। इससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी क्रिकेट बहुत एनहांस हो गया क्या होगा। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब फॉरेन प्लेयर्स आते हैं तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, लेकिन इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव टूर्नामेंट। तो नेचुरली, कुदरती तौर पर जो हमारे मद्दाह हैं, फैंस हैं हमारे
मुल्क के, वो चाहते हैं कि बड़े-बड़े नामों को देखें। लेकिन वो ना इतने बड़े नाम ना होते हुए भी कभी-कभार इतनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंसेज़ एक्सट्रैक्ट करना, सो kudos to Mohammad Rizwan. So yeah, I would say that they just know exactly what to do with their players and how to extract the best out of them. So, would you say that Multan playing, Multan played their first 5 games in Multan? Do you say that they had a good advantage ahead of other teams to give them a good start, or do you say that their squad was a complete squad all around? नहीं, देखिए स्क्वाड तो कंप्लीट रहा ही है ऑल अराउंड, और उसकी मिसाल हमने आज भी देखी जो कराची में उन्होंने मैच आज जीता है। लेकिन होम ग्राउंड का हमेशा एडवांटेज होता है, देखिए उससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता, बिकॉज आपके बहुत सारे जो डोमेस्टिक में लोग खेलते हैं उनको इन ग्राउंड्स का बहुत अच्छे से पता होता है। मुल्तान की जो पिच है वो बहुत डिफरेंट है कराची से, और उसमें थोड़ी सी असिस्टेंस मिली थी, कुछ मदद मिली थी बॉलर्स को। तो यस, उनको एडवांटेज ज़रूर था, लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड से कि उनका स्क्वाड वैसे भी ऑल अराउंड बैलेंस रहा है। बिल्कुल। अगर हम लोग कराची के मैचेस की बात करें तो कराची की कंडीशंस हैव बीन very different compared to Pindi, compared to Multan, compared to Lahore. Karachi has seen so far low scoring games. I don't think कि अब तक कोई भी गेम ऐसा हुआ है जिसने 200 क्रॉस किया है इन कराची। तो क्वालिफायर है, काफ़ी important गेम है। Peshawar Zalmi has been winning games, but they've been winning games at a very close margin. Even last game that they won against Karachi, they won by 2 runs. They've been coming very close to they've been playing very close games. So, Peshawar Zalmi has been peaking at the right time. They've been performing like, I would say, to an extent how Pakistan team would perform in a tournament. के start थोड़ा सा shaky सा होता है, playing 11 आपकी set नहीं होती है, but then all of a sudden आपकी, well, I won't say all of a sudden, but things start to fall in place for you. Your batsmen are starting to hit runs or score runs. Your bowlers are taking wickets. Your bowlers are able to defend runs that you're putting up on the board. So Peshawar Zalmi की journey so far आप किस तरह रेट करते हैं in this PSL? नहीं, देखिए पेशावर ज़ल्मी भी हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते आए हैं। मैं ये भी कहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी शायद वो वाहिद फ्रेंचाइज है पूरे PSL की, हमेशा से रही है कि अगर PSL को हमने दुनिया में मार्केट करना है ना, और अगर हमें एक पोस्टर चाइल्ड चाहिए पूरे PSL में से, लाइक अगर फ्रेंचाइजेस को देखें तो दैट फ्रेंचाइज वुड बी पेशावर ज़ल्मी, हैंड्स डाउन, बिकॉज उनका जो मार्केटिंग का जो भी आप कह सकते हैं कि सिलसिला रहा है, जो उनकी अप्रोच रही है मार्केटिंग की, वो सबसे बेस्ट रही है। उनकी वैसे भी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी इन्वॉल्व है, एंड ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी इट हैज़ ऑलमोस्ट लाइक अ कल्ट फॉलोइंग। बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं, एंड दे हैव बीन ब्लेस्ड विद द कोच डैरेन समी, एंड देन ऑब्वियसली द किंग बाबर आजम इज देयर कैप्टन। सो आई थिंक there has always been so much happening in Peshawar's camp, because everybody is so passionate, so animated sometimes as well. ठीक है, उन्होंने कुछ गेम्स हारे, लेकिन आई थिंक फैंस जो हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं कि हमारे जो हम सब उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं बाबर आजम, उनकी परफॉर्मेंसेस जो रही हैं उससे होता क्या है कि जब वो जैसे जैसे उन्होंने खेला उससे टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और बाबर आजम के अराउंड जैसे साइम अयूब ने खेलना स्टार्ट किया, और उसके बाद जब ये दोनों इतना ज़बरदस्त स्टार्ट देते हैं तो जो बाकी के बैटर्स आते हैं बाद में उनके लिए बहुत आसान हो जाता है उस मोमेंट को कैरी ऑन करना। तो आई थिंक आई वुड डेफिनेटली रेट पेशावर ज़ल्मी क्वाइट हाई एज वेल। ठीक है, उन्होंने 1-2 मैचेस हारे, लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। इवन जो आमिर जमाल को आप देखें, जिस तरह उन्होंने अभी मैच फिनिश किया है बॉलिंग करते हुए कल, सो ये कोई छोटी मतलब आम बातें नहीं है, दिस इज़ प्रीटी सिग्निफिकेंट। और इंशाल्लाह यही जो परफॉर्मेंसेज है पेशावर के में जो लोग खेल रहे हैं इस वक्त, जो कल को पाकिस्तान के लिए भी खेलेंगे, ये कॉन्फिडेंस बहुत सिग्निफिकेंटली कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग पेशावर्स वे, और ये कोई लक नहीं है, कोई किस्मत नहीं है, ये उनका हार्ड वर्क है, and that shows when we see them bat or ball, even field, in the last few games. Yeah, absolutely. I mean, Peshawar Zalmi ka, I've been a huge Peshawar Zalmi fan, mainly due to the fact that they had Shahid Afridi playing for them, तो मैं उस पर काफ़ी फॉलो करता था। फिर अब तो
बाबर आजम आ गए हैं तो एक अलग ही लेवल की फैन फॉलोइंग हो जाती है. बट ओवरऑल आई एम रियली हैप्पी विथ हाउ Babar, I'm really happy how Babar Azam has been allowed to, play the way he has played. It looks like Babar Azam is enjoying his cricket. He's making calls. He's comfortable with where he's at, and it's quite refreshing to see. If you look at Babar Azam, 3 or 4 months back, you would not find that kind of a comfort or that kind of relaxation in him. So I'm really happy that, from Babar's perspective, this is really going well for him, and from Peshawar's perspective, that they're getting the best performances out of a guy who's, who had it coming, whose performances were due, being the captain and the opener of the team. तो अगर हम लोग थोड़ा सा आते हैं कराची एज अ वेन्यू, I think Multan has already played a lot of games in Karachi now. Peshawar played their last game in Karachi as well. There are some changes to be expected, given the conditions of the venue, and some team news. Naveen-ul-Haq is not going to be available. He has national duty coming up, so he's not going to be available. Given they have signed Gus Atkinson. He's a English fast bowler who was Right. part of the English test squad that toured India recently. और but I don't think ये लोग extra seamer खिलाएंगे. Given just to complement the conditions in Karachi, I feel like ये लोग एक extra spinner के साथ जाएंगे, and that will be Arif Yaqub for me. And I think that's the only change I can see happening in Peshawar's 11, and that is for Naveen-ul-Haq to go out and Arif Yaqub to come in. But that would mean that Peshawar is going to be playing with 3 overseas players, and that would be something that we would have to see how that goes. But any changes or any team 11, any playing 11 changes that you would like to see for Peshawar in this playing 11, apart from the one force change? नहीं, आई थिंक जो जिस चेंज की आपने बात की, आई वुड एग्री विद दैट बिकॉज हम जैसे भी बात कर रहे थे कि कराची की कंडीशंस कंपैरेटिवली बहुत डिफरेंट है बाकी वेन्यूज से. मैं तो ये भी कहूँगा कि कराची की कंडीशंस जो अभी हम देख रहे हैं वो इवन कराची की अपनी कंडीशन से बहुत डिफरेंट है जो हम पहले देखा करते थे, बिकॉज द वे द बॉल हैज़ बीन टर्निंग. अभी जो पेशावर का पिछला मैच हुआ है वहाँ पर द बॉल वाज टर्निंग क्वाइट सिग्निफिकेंटली. मतलब ऐसे ग्राउंड पे जब मैं मैच देख रहा था मैंने कहा यार यहाँ पे 135 140 भी होगा तो फाइटिंग स्कोर होगा, बिकॉज देयर इज अ चांस. तो आई थिंक जो आपने बात की है कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेकर आने की, दैट मेक्स सेंस और यही करना चाहिए. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कराची के ग्राउंड में कंडीशंस को बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज होंगी. ठीक है, जो आज हमने मैच देखा उसमें 170 प्लस स्कोर हुआ वहाँ पर, लेकिन credit goes to the way the batters were playing, but I think Quetta could have used their spinners much more efficiently. वो उनसे हो नहीं पाया. तो आई थिंक अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर और होगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, एंड आई थिंक पेशावर शुड डेफिनेटली गो विद दैट. बिल्कुल. would you consider कि अगर थोड़ा आरिफ याकूब पे बात की जाए, आरिफ याकूब ने एक ओवर में 4 विकेट्स थी. 5 विकेट हॉल उनका हुआ था अगेंस्ट इस्लामाबाद इन लाहौर. और फिर I'm not going to say he was dropped, but I feel like if for a better combination he was benched for a better combination. Do you suspect कि confidence player or confidence में से कोई change होना चाहिए, given the fact that he was performing, and if he does come in it'll be a big game. क्या लगता है आपको प्लेयर के रवैये में, प्लेयर के कॉन्फिडेंस में कितना फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जैसे आपने कहा कि एक बेहतर कॉम्बिनेशन के लिए उनको बाहर बैठना पड़ा. और मेरे ख्याल से कि जब आप PSL के लेवल का टूर्नामेंट होता है तो ज़ाहिर है क्लब क्रिकेट तो है नहीं कि किसी को आपने मैच से घंटा पहले बताया कि ओ बाय द वे तुम नहीं खेल रहे आज. तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग होती होगी इनकी जिसमें ये लोग सारे कॉम्बिनेशंस डिस्कस करते हैं, और वो कॉम्बिनेशंस अक्सर सिर्फ कंडीशंस की बेस पे नहीं होते. बहुत दफ़ा आपको अपने अपोजिशन की टीम को भी देखना होता है, और अगर कंडीशंस कंड्यूसिव हों भी
एक सर्टेन बॉलिंग कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन अगर दूसरा बॉलिंग कॉम्बिनेशन कोई ऐसा बन रहा है जिससे आपकी अपोजिशन टीम कंफर्टेबल ना हो, तो यू हैव टू डू सम गिव एंड टेक हियर एंड देयर, तो कॉम्प्रोमाइज होता है वहाँ पर। तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि उनके कॉन्फिडेंस या रवैये में कोई फ़र्क आएगा, बिकॉज आई एम श्योर कि ही मस्ट हैव बीन टोल्ड वे अहेड ऑफ टाइम कि देखो यार ये रीज़न है इसलिए हम नहीं खिलाए, लेकिन आई वुड लव टू सी आर इफ यू प्लेइंग ऑन थर्सडे। उसके एक रीज़न ये भी है कि आपने आज देखा होगा कि मुल्तान को थोड़ा सा तंग किया स्पिनर्स ने आज। उस्मान खान जो कि इतना फ्लुएंटली खेलते आ रहे हैं, वो उनको जब अब्रार ने आज आउट किया तो दैट वाज दैट सेड अ लॉट बेसिकली। तो इसी तरह अगर आपके पास जैसे मेहरान हैं पेशावर ज़ल्मी में, वो जो कि बहुत ज़बरदस्त पेस पे बॉल कर रहे होते हैं, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे होते हैं, उसमें आई कैन टोटली सी उस्मान खान गेटिंग अ बिट ट्रबल्ड। मोहम्मद रिजवान हमारे अनदर सुपरस्टार हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। साइम अयूब जो हैं वो मेरे ख्याल से ही इज़ बीन प्लेइंग ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। हम सारे उनकी बैटिंग को तो तारीफ़ करते हैं, लेकिन जो बैलेंस उन्होंने एक बॉलिंग में दिया ना, देखें जब आपके पास बॉलिंग में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन वैसे ही आ जाती है ना, जिस ऑप्शन के लिए आपको किसी की जगह कॉम्प्रोमाइज़ ना करनी हो, तो एज अ बॉलिंग कैप्टन इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर यू। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज अ स्पिनर हु इज टेकिंग विकेट्स, मतलब जब जब साइम अयूब बॉल करने आए हैं, मोर ऑफन देन नॉट ही हैज टेकन विकेट। तो और साथ अगर आरिफ याकूब आते हैं, तो जो तीन आपके पास ऑप्शंस हैं ना ये स्पिन की, मेरे ख्याल से मुल्तान के लिए कराची की पिच पे ये बहुत मुश्किल करने वाली है। तो आई थिंक ये रवैये में फ़र्क नहीं होगा, लेकिन एट द सेम टाइम however at the same time I think it's going to be quite the opposite, where he would be feeling quite confident and just pumped and ready to go in and be part of the action, especially when he have somebody like Saim Ayub and Mehran bowling alongside him. So इसी का I can probably come up with a follow-up question on this, and that is कि since Naveen Ulaq is out, or he if he is out, um why not play Paul Walter in place of him to strengthen your batting as well, to have a longer batting, and then allow Saim Ayub to ताकि वो अपने पूरे 4 ओवर कराएं. Saim Ayub right now is used as a convenience type of a bowler, कि अभी 1-2 ओवर की गुंजाइश लग रही है तो आपने Saim Ayub को ले आए, and he's been able to provide wicket for Peshawar. But I don't think they would want to do that, to use Saim Ayub as a full-time bowler. But I think that's also an option, considering how well Saim has performed. नहीं, बिल्कुल ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि मुल्तान के जो बैटर्स हैं फ्रॉम टॉप ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर, आई थिंक वो पेस को अच्छा खेलते हैं और स्पिन में वो डेफिनेटली तंग होंगे, बिकॉज इफ्तिखार भी हमारे बहुत अच्छा खेल रहे हैं मुल्तान में, लेकिन जितना अच्छा वो पेस को खेलते हैं वो उतना अच्छा स्पिन को नहीं खेलते, वो ट्रैप हो सकते हैं। तो आई थिंक इसकी बुनियाद पे मैं ऑल्दो bringing Walter in will be a good option, but I think sticking with 3 spinners, especially against Multan, would be a better option. Okay, तो इसी के साथ साथ do you see Multan fielding a unchanged 11? Yes, I can see that. उसकी रीज़न ये है कि एक तो उनका विनिंग कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है, उनका ज़रा कॉन्फिडेंस भी हाई है, और knowing Rizwan, he's the kind of captain who likes to basically play a bit aggressively. Yeah. और वो उन्होंने अपने प्लेयर्स को, जैसे हम अभी बाबर आजम की बात कर रहे थे कि बाबर आजम को बेसिकली इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त ये सब कुछ हुआ है, बिकॉज he has been able to express himself to the fullest extent. Kudos to Zalmi's management कि उन्होंने उनको इतना confidence दिया, and frankly for a player like Babar Azam you don't need that much confidence because he's always full of confidence anyway. जो performance tips होते हैं वो कई बार आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर हम रिजवान की बात करें तो वो भी मुझे लगता है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंस देते हैं अपनी टीम को। और कभी कभार क्या होता है कि जब आप एक क्रूशल गेम में आकर कॉम्बिनेशन चेंज कर देना, तो वो टीम के मोराल पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए मुल्तान इस टॉप पे बैठे हुए हैं, मुल्तान अगर ये थर्सडे का मैच हार भी जाए तो दे स्टिल हैव अनदर चांस टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। ज़ल्मी के साथ ये नहीं है, तो आई थिंक नोइंग दैट दे हैव अनदर चांस, आई थिंक रिजवान विल गो विद अनचेंज 11 बिकॉज ही वांट्स टू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू हिज टीम। अगर वो फाइनल में पहुंच गए इस मैच के बाद तो ज़बरदस्त, बल्ले बल्ले, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, देन दे कैन ट्राई सम अदर कॉम्बिनेशन, बट आई थिंक दिस वन दे माइट गो अनचेंज्ड। Yeah, I mean, इस कॉन्टेस्ट के जो भी लूजर होगा वो क्वालिफायर 2 तो खेलेगा ही ना, तो राइट। तो उस लिहाज से
आप इस कंफर्ट लेवल के साथ जा सकते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन चेकआउट नहीं करता है तो यू हैव अनदर चांस. राइट. बट आई फील लाइक कि अगर आप क्वालिफायर 2 में जाते हैं, that's virtually a semi-final, and then you're knocked out at that point. So that sounds, that would probably put too much pressure, in my opinion. But let's see how they go on that regard. तो हमने अभी बाबर आजम की बात की, but I think one person that we have not talked about is उसामा मीर. उसामा मीर की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो he's been under the radar. He's been on the radar for a lot of wrong reasons prior to the PSL. World Cup में उनका काफ़ी average performance थी. He's had bowling issues, जैसे short pitch उनकी ball बहुत होती थी और full toss बहुत करा रहे थे. He's had significant technical issues that we have not seen him do that in this tournament. So काफी it's a new Osama Mir that we have seen, and he's the leading wicket taker now. Babar Azam is the leading run scorer. तो एक ये matchup है जो it's going to be a good matchup if the competition goes that deep with Babar and Osama Mir, क्योंकि Osama Mir को बाबर आजम ने छक्के भी मारे, Osama Mir ने बाबर आजम को आउट भी किया. Right. So it's a even contest, considering both of these guys are on in good form. But apart from these two, do you have any matchups that you're looking forward to? देखिए, एक तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने बात की है, एंड आई वुड आल्सो से कि इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी उसामा मीर रीगेनिंग हिज फॉर्म. ही इज़ अ ह्यूज टैलेंट. उनके कॉन्फिडेंस मुझे लगा थोड़ा सा डिप आया था पिछले कुछ अरसे में, लेकिन आई सिंसियरली होप कि ये जो PSL का सीज़न है इससे इनका जो ट्रेजेक्ट्री है वो ओनली अपवर्ड रहे. सो ऑल द बेस्ट टू हिम एंड रियली गुड टू सी द वे ही परफॉर्म टुडे एज वेल. एक और जो मैचअप है वो I would love to see the battle between Usman Khan and Mehran. I think वो interesting होगा because Mehran जो है मुझे what I love about that guy is the fact that he's a fighter. The way he darts all the balls in, flight भी try करने लगी है मैं थोड़ी सी अब, लेकिन he's laser focused every single time. साथ के साथ उस्मान खान भी बिल्कुल ऐसे ही हैं. He is also very focused and he wants to go after the bowler. So I think that matchup is also something that I'm looking forward to. एक और जो कॉम्बिनेशन मैं कहूँगा वो क्या कहते हैं आपका सलमान इरशाद और आप कह सकते हैं मुल्तान में उस्मान खान ऑल्सो एंड रिजवान एज वेल. तो बिकॉज जो सलमान इरशाद का जो एक्शन है थोड़ा स्लिंगी सा, उसमें उस्मान खान वुड वांट टू गो आफ्टर हिम, बट इट कुड आल्सो बी ट्रिकी क्योंकि उनका बॉल थोड़ा रिलीज पॉइंट लो है, इट माइट स्किड एज वेल. तो उस्मान खान का ये है कि ही लाइक्स द बॉल टू कम ऑन हिज बैट, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा. सो दीज आर द अदर कॉम्बिनेशंस दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ क्लैश ऑफ द टाइटंस. आई मीन दिस इज अ क्लैश ऑफ द टाइटंस एसेंशियली. टेबल टॉपर्स आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि ये मज़ा आएगा मैच देखने का, ये स्पेसिफिक जो कुछ मैचअप्स हमने बात किए. बिल्कुल. आई मीन देखिए, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि PSL में काफ़ी परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं जो आप नेशनल टीम में रेप्लिकेट नहीं कर पाते. But I feel like in this PSL we've seen a lot of refreshing performances from a lot of individuals. Babar Azam, Shadab Khan, Osama Mir, to an extent, Shaheen Afridi a little bit, but I think उसामा मीर की मुझे परफॉर्मेंसेस इसलिए अच्छी लग रही हैं ज़्यादा क्योंकि उस पर इतना प्रेशर था बेचारे पे. उसने आई थिंक सिंस दैट ऑस्ट्रेलिया गेम वेयर डेविड वार्नर वाज स्मैश्ड अस अराउंड, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि वो बंदा ना थोड़ा प्रेशर में आ गया. बट एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी, जैसे कि आपके पास इंटरनेशनल कोचेस थे ऑन योर नेशनल सेटअप. he's been working with coaches for a while. अभी मुल्तान सुल्तान्स की जो कोच हैं एलेक्स हार्टली, she mentioned that he's had some technical flaws which she was able to identify and help him with, but the same kind of technicality was not identified in the national setup. इसमें do you see any reason that this problem was not highlighted in a national setup but it was highlighted in a
franchise setup, and it looks like it has been corrected, that he is performing so well now. Do you suspect that there's a gap there at all? Yeah, I think that's a huge gap. To be very honest with you, मुझे नहीं पता था इस बात का, जो आपने बात बताई है कि टेक्निकल फ्लॉ थे जो कि आइडेंटिफाई कर लिए उन्होंने PSL पे। देखें, दैट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय ओपिनियन। एक तो ये है कि आपके नेशनल लेवल के जो कोचेस हैं, अगर वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आई एम नॉट श्योर व्हाट देयर फोकस वाज एंड आल्सो व्हाट देयर प्रायोरिटी वाज। लेकिन ट्राइंग नॉट टू बी सो हार्श ऑन देम, आई वुड ऑल्सो से कि कभी बार क्या होता है कि देखें, जैसे अगर हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हम अपने टीचर्स के पास बैठे होते हैं, बहुत से हमारे टीचर्स होते हैं जिनके साथ हम ओपनली बात करना कंफर्टेबल फील नहीं करते फॉर वट एवर रीज़न, चाहे उनका हो सकता है किसी टीचर का रोब हो या किसी के साथ हमारी वो फ्रेंकनेस लेवल ना हो, या किसी की हम रिस्पेक्ट इतनी करते हैं कि उनके आगे शायद हम अपने आप को फील एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते। ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि जो मुल्तान के कोचेज़ हैं, उन्होंने ऐसा कंफर्ट लेवल बनाया है जिसकी वजह से जो प्लेयर्स हैं वो उनके साथ बहुत फ्री काम कर सकें। लेकिन मैं एट द सेम टाइम दोबारा अपनी पहली बात पे आऊँगा और ये कहूँगा कि देखें, अगर आप कोच हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि अगर कोई हेसिडेंट है आपको कोई बात बताने में, या वो थोड़ा सा इतना फ्रीली नहीं आपसे आपका काम कर पा रहे, so I think as a coach, you have to go an extra mile to make them comfortable with you, because your job is to make sure that you get the best out of the players, and at the same time, अगर कोई flaws हैं तो उसको correct करें। तो like you said कि I mean मुल्तान की जो कोच हैं, वो तो अभी कुछ देर से ही काम कर रही है मुल्तान के स्क्वाड के साथ। नेशनल कोचेस तो कितने अरसे से काम कर रहे हैं, सो दिस इज सर्टनली अलार्मिंग। आई थिंक दैट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस के व्हाई वाज दिस नॉट आइडेंटिफाइड सो मेनी मंथ्स अगो, व्हाई इज दिस हैपनिंग नाउ? आई एम ग्लैड दैट इट्स हैपनिंग नाउ, बिकॉज लाइक यू आर सेइंग, it looks like the flaw has been corrected and we can see that reflected in his performances as well. But at the same time, you do have a feeling that I wish this should have happened a long while ago. Yeah, it's in the past now, and there's no point in talking about that. But going forward, we hope that these flaws that we see in our system is rectified and given proper attention. बिल्कुल। But wrap up करने से पहले, who do you आप क्या चाहते हैं, कौन जीते आज का क्लास? देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा कि आई एम फ्रॉम मुल्तान, तो एक ज़ाहिर एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है, लेकिन आई थिंक आई एम साइडिंग विद ज़ल्मी इन दिस कॉन्टेस्ट, एंड इट्स नॉट बिकॉज आई एम अ ह्यूज बाबर आजम फैन या कुछ ऐसे, बट आई थिंक द वे ज़ल्मी हैज़ been on that upward trajectory over the last few games. I think they deserve this win. It is going to be a tough game. It's not going to be a walk in the park for either of the teams, but I think Zalmi will most likely end up winning this contest. आप बताएं, आपको क्या लगता है? Yeah, same. I would like that too. देखिए, मुल्तान ने बहुत कर लिया। I think आप उनको थोड़ा क्वालिफायर से थोड़ा लोग वापस भेज देते हैं, क्योंकि Peshawar has not been in the finals since 21. I think 2021 का फाइनल था जो मुल्तान और पेशावर का हुआ था। उससे पहले I think 2018 का फाइनल पेशावर ने खेला था। Right. तो I think Multan, for with all due respect, I feel like उनकी अब दूसरी टीम को मौका मिलना चाहिए फाइनल में आने का। तो that's I would like to see Peshawar Islamabad final, because I feel like Islamabad also has peaked at the right time. Their bowling has been good, their batting has been good in the latter stages of the tournament, and I feel like that's where it's going to be. But तो चले इसी के साथ साथ हम लोग आज का preview wrap up करते हैं. If you guys have not checked out Zalmi TV, please go ahead and check out and subscribe to Zalmi TV. Please also go ahead and check out the Gulley Cricket Show. The link of that will be in the bio. आज तक के लिए इतना ही. इंशाल्लाह हम आपसे next time मुलाकात होगी for Qualifier 2 and Eliminator. तब तक के लिए हम लोग को इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.